So today we have to do the revision of chapter 2, that is formulas and functions in Excel. And I will unmute you to answer the question side by side. So let's start. What are formulas? Hanji, what are formulas? You can unmute yourself, bache, and answer. What are formulas? Mathematical expression that includes operands and operators to evaluate the result. Any other definition? You can explain the meaning. You can Formulas are formula like addition, subtraction, division, and multiplication. A formula always begins with equal to. So formula is basically the expression which is used to perform some calculation, जिसकी help से आप कोई calculation perform करते हो, right? So formulas में होता क्या actually? Formulas always starts with equal to sign. Equal to sign. तो फॉर्मूला हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इक्वल टू साइन से. और फॉर्मूला के अंदर क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं. ऑपरेटर्स मींस व्हाट अरिथमेटिक ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म. आप कैलकुलेशन क्या करना चाहते हो? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. So you can use any arithmetic operators and operands. Operands here means cell addresses on which you want to apply some operation. जिसके ऊपर भी आपने ऑपरेशन अप्लाई करना है, आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हो, तो आप प्लस माइनस से किस पे लगाते हो? ऑन दी ऑपरेंड्स, ऑन दी सेल एड्रेसेस. तो मीनिंग क्लियर हुआ ना डेफिनेशन का कि इक्वल टू से स्टार्ट होगा, उसके अंदर ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स होंगे. ऑपरेटर मीन्स कौन सा आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है और किस पे करना है, दैट इज दी ऑपरेंड. द डेफिनेशन इज क्लियर. And why we are making an expression? Because after solving it, we are evaluating the results. We are executing it for getting the results. Clear? Now look at the example. Equal to D4 into E4 divided by F9. So this is one formula. अब इस फॉर्मूला में देखो तीनों पार्ट्स आ रहे हैं हमारे. इक्वल टू आ रहा है, ऑपरेटर आ रहा है और ऑपरेंड्स आ रहे हैं. ऑपरेंड्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से ऑपरेंड्स हैं? हाँ जी बताओ. D4, E4, F9. D4, E4, F9. मैंने भी आपको बताया ना, जो ऑपरेंड्स हैं वो सेल एड्रेसेस. और ऑपरेटर्स कौन से हैं? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिनके ऊपर आप कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो. एंड देयर आर टू वेज बाय विच यू कैन एंटर द फॉर्मूला, on the formula bar or in the cell of the worksheet. On the formula bar or the cell of the worksheet. There are two buttons on the formula bar, that is enter button. Enter button and cancel button. Cancel button. Correct. So two buttons are enter button or cancel button. Two buttons कौन से हैं formula bar पे? Yes, once again. Enter button and cancel button. Enter button or cancel button. Now according to the definition, बच्चे look carefully. The three parts of the formula are, formula में three parts हैं, that is equal to, operators, operands. What are the parts of formula? Equal to, operators and operands. Operators means any arithmetic operator that you want to perform. Operands means जिसके ऊपर हम ऑपरेटर लगा रहे हैं. The cell addresses are called operands here. So we are applying a formula. So three parts are equal to, operators and operands. How to enter the formula? You can enter the formula either in formula bar or either in the cell. आप directly formula bar पे click करोगे and you start writing. आप formula वहाँ पे भी type कर सकते हो. The second way, you can directly click inside the cell, a cursor will appear and you can type the formula again. So when you're working on the formula bar, you have seen two buttons are, rather three buttons are there on the formula bar. Enter button, cancel and insert function. वहां पे पहले दो कौन से buttons आ रहे होंगे? Enter button और cancel button.
What is the symbol of enter button? What is the symbol of enter button? Ma'am, tick. You can Tick sign. Tick sign, yes. Enter button का symbol आ रहा होगा tick sign. And cancel button? Ma'am, cross sign. Cross sign. Very good. So this thing is clear. ये सबको clear है? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. The next is cell references. What are cell references now? Cell references are the addresses of a cell in the formula. Cell address. जो भी सेल का एड्रेस है उसको हम क्या कहते हैं? सेल रेफरेंस. सेल रेफरेंस का अदर नेम है सेल एड्रेस. क्लियर? The other name is cell reference or cell address, means the address of a cell in a formula. Like in the previous slide we did ना, equal to A1 plus B1 divided by C1. तो हम क्या कर रहे हैं? हम cell addresses के ऊपर एक formula create कर रहे हैं, right? So cell addresses that is inside a formula, a complete formula that is called the cell address. Or you can say cell address में क्या आ रहा है? जैसे मैंने बोला A9, A is column, 9 is row. So it is a combination of column name and row number. Cell address में क्या क्या होता है? एक row number होता है और एक column name होता है. For example, A2, A is column and 2 is row number. So that means it is a combination of column name and row number. Now there are three types of cell references. The three types are relative cell reference, absolute cell reference, mixed cell reference. Three types कौन सी हैं? Relative, absolute, mixed. In the relative cell addressing बच्चे we already discussed the contents will be changed. Contents आपके change हो जाते हैं accordingly wherever you are pasting. You are copying from one cell and you are pasting onto the another cell. जब हम copy करके paste करते हैं another cell पे तो हमारा content change हो रहा है. For example, C3 will get changed into the D3 or D4 or D5. Similarly, C3 can change into C4, C5, C6 also. So when the content will get changed, the addresses will get changed. So that is the relative cell reference. Second is absolute cell reference. Absolute means the content will not change. Either you are copying, yes. मैम हमारा मैम टेस्ट 3 था मैम चैप्टर 2 का मैम उसमें मैम मुझे मैम 5th क्वेश्चन मैम मेरा गलत हुआ था मैम. Okay, we will discuss later on after this chapter. Okay, just remind me. Okay मैम. Okay, so we were talking about the absolute now. So in absolute, when you copy the content from one cell and you are pasting onto the another cell, the content will not change. हमारा content fixed रहता है, content will be same. It will not get changed. Okay, that is absolute. It is same. Mixed. Mixed means partially. Half of the content will change. Half of the content will change means either the row will change or either the column will change depending upon कि आपने row को absolute किया या column को absolute किया. Are you getting my point? Mixed reference means partially the content will change either row or either column, but it will depend that whichever you have make a absolute one. Now how to make absolute? How we are able to come or how we are able to recognize that which part is absolute? हमारी row absolute है या column absolute है? How we are going to differentiate? With the help of dollar signs. When there will be no dollar sign, it means relative. When there are two dollar signs, that means it is an absolute. क्या आपने रो को भी absolute कर दिया, आपने column को भी कर दिया, तभी तो दोनों के आगे dollar आया है. तो dollar दो आगे, that means आपका content change नहीं होगा. Clear? Third one is mixed. Mixed means half of the content will change. अगर रो के आगे डॉलर है तो रो चेंज नहीं होगी, अगर कॉलम के आगे डॉलर है तो कॉलम चेंज नहीं होगा. अब फर्स्ट एग्जांपल में देखो $4. $4 मींस इट कैन चेंज इनटू $4, $4, $4 मींस कॉलम चेंज हो रहा है बट रो चेंज नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि रो के आगे डॉलर लगाया है. सिमिलरली $F6, so it means it can change into $7, $F7, $F10, $F12 कुछ भी. But 6, 7, 8, 9 can change. That is relative. But F के आगे डॉलर लगा है तो कॉलम हमारा क्या हो गया?
absolute. The three types of references are clear? सबको clear है? Yes, ma'am. तीनों references clear हो गई बच्चे? To everyone? Sure? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Yes. ma'am, can I show my Excel sheet? So firstly, let's complete our chapter. We have to do the revision because on Monday there is a revision test now. So that's why let's revise the chapter first. Okay. So this thing is Okay. clear. The types of references are clear to everyone. Yes, ma'am. The references are clear. Excuse me, ma'am, ये references दोबारा समझा दो. Okay. But there are three types of references. Relative says the content will get changed accordingly wherever you are going to paste. ठीक है, आप कॉपी करके दूसरे सेल पे जा रहे हो तो you can able to change. The content will change. For example, C3 can be converted to the C4 or D5, E7. Wherever you are going to paste, accordingly the content will change. Absolute means no content will change. ना ही row change होगी, ना ही column change होगा. Nothing will get changed because there are $2 signs. Mixed means partially the content will change, half of the content will change. Either column will change or either row will change depending upon कि आपने किसको absolute बनाया हुआ. जैसे $4 में मेरा B relative है but 4 absolute है क्योंकि 4 के आगे डॉलर है, मतलब रो डॉलर है लेकिन कॉलम absolute है तो कॉलम relative है तो कॉलम चेंज होगा. It can change to C$4, D$4. Similarly, $F6. It can be $F8. मतलब 6, 7, 8 चेंज होंगे, रोज चेंज होंगे, लेकिन कॉलम फिक्स्ड है, कॉलम एब्सोल्यूट है, तो कॉलम चेंज नहीं होगा. जिसके भी आगे डॉलर साइन आ गया वो एब्सोल्यूट बन जाता है, बट मिक्स्ड में सिर्फ एक ही डॉलर साइन होगा, एब्सोल्यूट में 2 डॉलर साइंस विल बी देयर, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट आपका फिक्स्ड है, कुछ भी चेंज नहीं होगा. मिक्स्ड में चाहे रो चाहे कॉलम इट कैन बी चेंज्ड, एंड इन रिलेटिव बोथ विल बी चेंज, रो एंड कॉलम्स, क्योंकि कंटेंट विल चेंज इन द रिलेटिव. हाउ टू मेक एब्सोल्यूट? जस्ट बाय पुटिंग अ डॉलर साइन. क्लियर? Yes, ma'am. Examples are clear? Yes, ma'am. Now Yes, let's ma'am. start. What are functions? Functions are the predefined formulas in Excel. जितने भी predefined formulas हैं, अब देखो हमने फर्स्ट स्लाइड पे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था that there are 3 parts of the formula equal to sign, operand and operators. हम खुद फॉर्मूला क्रिएट करे थे. We are making ourselves, है ना, हमने themselves अपना खुद का एक फॉर्मूला क्रिएट किया. But there are sometimes predefined formulas available, पहले से ही होते हैं. For example, sum. एक तो चीज है कि आप फॉर्मूला बना रहे हो इक्वल टू A1 प्लस B1 प्लस C1, आप खुद बना रहे हो A1 प्लस B1 करके. अगर आपको प्लस ऑपरेटर नहीं यूज करना तो हमारे पास प्री डिफाइंड पहले से ही फॉर्मूला है सम. तो अब सम की हेल्प से सम प्लस प्लस ही होता है ना सम भी, तो वी कैन एबल टू कैलकुलेट द सम. सिमिलरली इफ यू आर मेकिंग अ फॉर्मूला इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई बाय B1, तो दैट मीन्स आप मल्टीप्लाई से प्रोडक्ट का अप्लाई कर रहे हो ऑपरेशन. मेकिंग अ फॉर्मूला वी कैन यू ऑल्सो यूज प्रोडक्ट फंक्शन इक्वल टू प्रोडक्ट एंड देन फंक्शंस, राइट. आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट हम पास कर देंगे. तो कहने का मतलब है कि हमारे पास पहले से ही कुछ फंक्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. जैसे सम ने एडिशन करना है, प्रोडक्ट ने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करनी है. द सेम वे we can able to define our formulas also, but there are predefined formulas and predefined formulas are called functions. Same way the parts of formulas are there equal to operator and operands. The same way there are parts of function also. The parts of functions are 3 parts. कौन से हैं function के? Equal to sign, function name, arguments. Equal to sign, function name, arguments. These are the 3 parts of function. Function के अंदर ये 3 parts होते हैं जहाँ पे पहले आप equal to sign लगाते हैं, फिर आप function का name specify करते हैं, and then you specify the arguments list. Okay. The syntax of function is clear. Now what are the various predefined or inbuilt functions in Excel? कौन से inbuilt functions हैं? Sum,
Average, max, Average. min, Mean, count, product, today, round, sum. Okay. Now, one by one, we have to discuss their meaning. What is the use of sum function? It is Excuse me, used to add the values. Yes. So sum function is used to give or it is used to perform addition on the given values in the set of range. जो भी range के अंदर values या cell addresses given होंगे, उनकी values को जब हमने add करना है. So sum function helps in adding or it helps in addition of the given values in the range. Average will return the average of numbers in the range. Average return करेगा when you want to calculate the average. Okay? Excuse me, ma'am. Yes. मैम मेरा मैम टेस्ट में मैम यही क्वेश्चन गलत हुआ था मैम फंक्शन वाला. Okay. So now the answer is clear. Yes, ma'am. So the functions are sum, average. Average function is used to return average of a number. जितने भी numbers होंगे उनकी average return हो जाएगी. Maximum will return. The previous number. हाँ जी, max will return. What is the use of max? Maximum value. Yes, it will give the Maximum highest value. value. It will give the largest value. Max function will return the highest value or the largest value from the given range. जितनी भी values है उसमें से सबसे highest value बताएगा. Min function, Ma'am, Minimum least value. least Lowest value or the value. lowest value. So min function will give the least value or the lowest value. Okay. What is the use of count? It will count. हाँ, सही बोल रहे हो. Count the students. It will count. Count the students. Count the number of entries. Count the number of values. एक वर्कशीट में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वर्कशीट के अंदर जितने भी वैल्यूज आपकी रोज हैं, इट विल काउंट द नंबर ऑफ एंट्रीज, काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द गिवन रेंज. रेंज जितनी दी होगी उस रेंज की काउंटिंग कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट. It will give the product of the value. It will just multiply the values in the given range. रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. टुडे Returns the current date. The present date. yes, Current current date will be displayed. System की date जो present date, current date आ रही है आज की date, that will be returned by the today function. Round. Ma'am, round the number to a specific digit. Very good. Round function will round the number to a specific digit. कि आपको decimal के बाद how many digits you want, तो आप decimal के बाद जितना comma के बाद एक digit दोगे, for example comma 2, तो means after decimal we require 2 digits. Comma 4, after decimal we require 4 digits. So this way you can set the number of digits that you want to display in your result by specifying a digit after the comma in the function. Got it? The functions are clear? मैम राउंड का फिर से बता दो. Round function will just display the number of digits that you want to display after the decimal. For example, हमारे पास है 98.2, 98.2323. अगर आप चाहते हो कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आए तो हम राउंड में रेंज कॉमा डिजिट डालेंगे. फॉर एग्जांपल 1, तो 98.2 मतलब कॉमा के बाद मैं 1 दे रही हूँ तो इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद मेरे को एक ही डिजिट चाहिए. अगर मैं कॉमा 2 डालूंगी इट मींस 98.23 means 2 digits I want after the decimal place. Excuse me, ma'am. हाँ जी. मैम मिनिमम लोएस्ट और लीस्ट की जगह मैम मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं ना. हाँ जी, that is also. ओके मैम. Next is using the function wizard. So the function wizard, you can use the function wizard for inserting the functions. This we have done practically also, जिसकी help से आप function insert करते हो. So command for using the function wizard, first method is formula stack, function library group, insert function button. What is the command? Repeat with me, everyone. Formula step,
function library group, insert function option. Yes. Formulas tab, function library group, insert function button. Second, the second method, insert function Click on button insert the function button on formula formula bar. bar. Insert function button on the formula bar. Formula bar. Clear? So two methods are there with the help of which you can able to insert a function using the function wizard. हम function wizard से directly function pick कर सकते हैं. So list of functions are available under this. Formulas tab, function library group, insert function button. The second method is click on insert function button on the formula bar. Next is AutoSum. Pardon? AutoSum feature contains the mathematical functions to perform the different operations directly. हमने एक summation button किया था, remember? Under the summation buttons, there is lot of noise from your end. किसी के पीछे से इतनी आवाज आ रही है, please mute yourself. So in the AutoSum बच्चे, if you remember, हम बटन पे क्लिक करे थे and we are getting a list of functions inside it. Clear? तो वहां पे functions आ रहे होते हैं. So that is the AutoSum feature which will help you to perform any mathematical operation quickly. आप directly एक function वहां से pick करके कोई भी operation perform कर सकते हो. But this AutoSum is available under two tabs. So two commands are there. First command, home tab, editing group, AutoSum button. Formulas tab, function library group, AutoSum button. Home tab, editing group, AutoSum button. Formulas tab, function library group, AutoSum button. These are the two commands for the AutoSum. Clear hai? Yes, ma'am. Learned also? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. The next is the functions. Which function is used to display the current date? Today. 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 Very good. Function that is used to display current date is today. Next is function used to display minimum value. Minimum. Function का name क्या है? Min. Not minimum. Function name is min. Function to display largest value. Max. Max. So max function की help से you can able to define the largest value. Next is average. Average will be defined with the help of average. Average. Function key to modify formula is F2. Function key is F2. Group of adjacent cells is called range. Symbol used to separate range of cells. Colon symbol. Symbol. Column symbol. Formulas always starts with Equal to sign. sign. Clear? All the functions are clear. Yes, ma'am. Variables Yes, on ma'am. which operations are performed? Operands. Operand. किसके हम perform करते हैं? Operands के ऊपर. Okay, write the function of formulas now. Find the sum of cells D1 to D8. Sum लगाना है Ma'am. तो sum function Equal to sum D1 colon D8. very good. Equal to sum D1 colon D8. Next, average of cells C11 to C20. Equal to average. Bracket close. Very good. Equal to average C11 colon C20. To find minimum values, Equals to min. That Equal to min B5 colon B15. colon equal to min B5 colon B15. Find the product of cells A1 to A3. is equal to Product A1 colon A3.
Correct. Equal to product A1 colon A3. Add B5, C5 and divide it by F5. Equal to अब इसमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, बनाओ फॉर्मूला. मैम is equal to B is equal to add मैम is equal to B5 plus C5 and Ma'am, equals to add B5. added by What 5 is add? F5 No, tell me what is add. Add तो कोई फंक्शन होता ही equal नहीं. to Whoever has sum speaker. B5. Ma'am, sum. सम भी क्यों लगाओगे आप Ma'am, उसमें? sum. B5 और C5 दो तो सेल्स हैं. Only two cells are there. equals to B5 colon C5 over F5. Y colon. Ma'am, B5 किया ही नहीं है. is equals to Ma'am, B5 plus C5 divided by F5. Yes, but अभी भी थोड़ा सा आपका गलत है. आपने partially correct बोला है. Equal to B5 plus C5 divided by F5. You people are saying this thing. Now listen very carefully. अगर आप कह रहे हो equal to B5 plus C5 divided it by F5, तो how it will be making a formula कि आपको पहले addition करने हैं, then divide करना है. अगर हम board mass के accordingly देखें, तो board mass में तो पहले priority किसकी है? D, division. डिवीजन के बाद एडिशन आ रहा है ना, बोर्ड मास डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो डिवीजन तो पहले चल जाएगा, एडिशन तो होगा ही नहीं. पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले ऐड करो फिर डिवाइड करो. बट अगर आप जो आंसर दे रहे हो, इफ यू विल राइट दैट आंसर, तो उसके साथ क्या होगा? C5 विल गेट डिवाइड बाय F5 और जो भी रिजल्ट आएगा डिवीजन के बाद वो B5 के साथ ऐड होगा. बट हमें तो ये चाहिए ही नहीं है. व्हाट वी नीड टू ऐड इट फर्स्ट. तो पहले ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी. ब्रैकेट्स. वेरी गुड, एक्सीलेंट. सो फर्स्टली वी नीड टू पुट ब्रैकेट्स, क्योंकि बॉड मास से सबसे पहले कौन सॉल्व होता है? ब्रैकेट्स. है ना. तो पहले हम इक्वल टू B5 प्लस C5 को वी विल राइट इट इन अ ब्रैकेट. वी विल राइट इक्वल टू B5 प्लस C5 इन अ ब्रैकेट. सो दिस विल बी मेक एज द बॉड मास. ठीक है. बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी. आफ्टर सॉल्विंग द ब्रैकेट इट विल गेट डिवाइडेड बाय द F5. मींस whatsoever the content you will get after the addition, आपने B5 और C5 में जो भी आपके पास आया है, so that will you get after addition part, and whatsoever the results of the addition will get, that will be divided by F5. Last में देखो divide H1 by H2. So simple formula is there. We are not having any function ना for division. हमारे पास कोई function नहीं होता. So what we will apply? A simple formula. We will simply divide H1 by H2 equal to H1 divided by H2. Now any doubt in any of the function here? no ma'am. All the functions are clear to everyone? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now And can I next, show my Excel sheet? बच्चे we are revising now. First let's revise the chapter first, as we are having the revision test on Monday, so we have to complete it. Okay. Once we will get the time, we will do the screen sharing also. So buttons, first button is you have Auto sum. Auto sum. Auto sum. Next, FX stands for Insert function. very Insert good. button. Insert function button. Cross Cancel. Cancel button. cancel button. button. Where it is present. Come on, formula bar. On the formula Cancel bar. button is present on formula bar. Formula bar. Button tick. Enter button. Ma'am, enter Enter button. button. This is the enter button, again present on the Formula bar. last. Autofill handle. Auto. Ma'am, auto fill handle. Yes. Ma'am, autofill handle button. Autofill handle. So all the buttons, all the symbols are clear. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. So we have revised chapter 2 thoroughly in detail. So once again after the class, give it a 10-minute reading so that आपको अच्छे से chapter prepare हो जाए for the revision test. So will you? Yes, You people will give time now? Yes, ma'am. Sure?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that's all for the today as the time is up now. Once we will do all the revisions, then we will just look into your worksheets. Okay? Okay, ma'am. Take care. Yes. Bye, Bye. ma'am. Bye. Bye, ma'am. God Bye, bless. ma'am.